Hi guys, so this is a requested video by some of my family and friends. They want to see where do I live. So today I will be giving you a tour of the place where I stay in New Zealand. So come on, let's go. So this is the view outside my house. Come on. Including us, there are 5 people who are staying together in this house. शुरू में यहाँ पे आपको ऐसे ही रहना पड़ता है बिकॉज न्यूजीलैंड इज़ एक्सपेंसिव, या तो फिर आप अंबानी की औलाद हो। दोस्तों के साथ रहने का ये भी फ़ायदा होता है कि हमें बहुत सारी हेल्प हो जाती है शुरू में। जब आप एक न्यू कंट्री आते हो तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग दैट यू नीड टू लर्न एंड एट द सेम टाइम बहुत सारा इमोशनल सपोर्ट भी मिल जाता है। सो आई हैव बीन वेरी लकी विद the people I stay with. They are really very nice. Ajay, Santosh bhai and Sneha Didi, you guys rock. I love you guys. So here we are. Welcome everyone. So this is the kitchen and this is the beautiful view. Oh my god, this looks amazing, right? So this is the living room area and the living room is divided into 2 parts. So this is the first area and now let me show you outside. Look at the view of the balcony, guys. It is so amazing. एंड दीज आर द डक्स और ये हर रोज़ आ जाती हैं खाने के लिए बिकॉज मैं रोज़ इन्हें खाना देती हूँ। सो दे आर काइंड ऑफ माई फ्रेंड्स नाउ। मुझे इंडिया में अपने फ्रेंड्स लोग की बहुत याद आती है तो मैंने इन डक्स का नाम ही रख दिया अपने फ्रेंड्स लोग के ऊपर, जावेद, पीके, सोना, डा एंड नुज़रत, एवरीवन। अगर मैं कोई फ्रेंड का नाम लेना भूल गई हूँ तो बिल्कुल भी ऑफेंड मत होना, समझना कि तुम मेरी ज़िंदगी की एक बतख ही हो। Coming back to the living room, so this is the second area of the living room. So it has sofa, TV and everything over here. And let me show you the view. This is the most beautiful area according to me. And when you open it, oh wow, look at the view guys from the window. It is so beautiful. And यहाँ पे पीछे पूरा lawn है which is very very big. जब lawn moving करनी होती है ना तब हालत ख़राब हो जाती है। So this is one more door of the house from which we can go towards the lawn, the back side of the house. So let's go. Hi दोस्तों, खाना खा के जाना हाँ। So this is the view from the backyard of the house. This is the house and this is the 360 view. So now let's go back inside the house. And here there are rooms जो मैं आपको अभी नहीं दिखाने वाली हूँ। So यहाँ ऊपर 3 rooms है एंड फिर हम बेसमेंट जाएंगे, वहाँ पे हमारा कमरा है, वहाँ पे 2 rooms है। सो टोटल यहाँ पे 5 रूम है इस घर में। इट इज़ अ वे। सो दिस इज़ द वॉशरूम और ये हूँ मैं। हेलो गाइस, हाय एवरीवन। सो आई होप यू लाइक द प्लेस वेयर आई स्टे। इट इज़ अ रेंटेड अपार्टमेंट एंड इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड आई लव स्टेइंग हियर। आई होप इंशाल्लाह एक दिन हम अपना खुद का घर ऐसी ब्यूटिफुल सा कुछ खरीदें। सो दुआ करना हमारे लिए। And now let me show you a beautiful beach which is just 5 houses away to my house, which is very nice. लगा मुझे।
everyone. I hope you like this video, and if you like it, do like and comment. Bye bye.